India has registered its highest ever single-day spike, with over 2,61,000 fresh cases of COVID-19 being reported, along with 1,501 fatalities. The number of active cases in the country now stands at 18,01,316 as of 9 a.m. The government has meanwhile announced, amidst reports and concerns of remdesivir shortage in the country, that they are aiming to double the production in the next 15 days. Delhi CM Arvind Kejriwal has said that the state is seeing a massive rise in COVID cases, with the positivity rate also touching 30% now. He added that there is a ICU beds and oxygen shortage in the national capital, and he has apprised the Home Minister and Health Minister of the same. Remember, the Prime Minister on Saturday had called for utilizing the entire national capacity across private and public sectors to produce vaccines, amidst concerns in various states about lack of these essentials. Through the course of the show, we'll be taking your calls as well as touching base with my colleagues from around the country to understand the ground situation better. We will be having our reporters live in just a bit from across the country, but we also have Dr. Sameer Gupta, cardiologist, Metro Hospital, joining us live on the program. Our viewers can also call in. Our numbers are flashing there on your screens. You can call us, share your questions with us, to our experts. You can also air your thoughts, opinions and suggestions on the broadcast. We will be taking your calls live. You can also write in on our social media handles. Let me begin with you first, Dr. Gupta. A couple of questions already coming in, sir, on our digital platforms. Perhaps you can help answering them. The first question comes in from Rajiv in Hyderabad. Rajiv Deshmukh says that he had his first vaccination on the 4th of March. It was Covishield. As per the guidelines, his second vaccination needs to be after 6 to 8 weeks after the first. Technically, the dates will be 15 to 29th of April. But right now, there is a severe shortage of Covishield vaccine here. He's worried if the same situation will continue. That's a very common thing we are being asked about. A lot of my patients are also asking me, what's the way forward with the vaccination? And Covishield is right now, from what I understand, there are some supply chain issues and production issues, but the government is working very strongly and very hard to try and mitigate some of these things. And this should improve over the next few weeks. And a lot of people, the other question they ask us is that, what about Covaxin? I have Covaxin available. I got Covishield the first time. Can I switch? And there is no data to show that it's beneficial. Does the entire immune system have to start all over again, or does it pick up where it left off? Because the second dose is kind of a booster dose to try and rev up the immune system a little bit more. So, let's keep our fingers crossed. Let's get the vaccination. I know the case numbers are increasing. Let that not be a deterrent to go to the facility or go to the hospital for the vaccination. In spite of it, please go get your vaccination and use all adequate precautions. India is right now on life support. Okay, Dr. Gupta, another question coming in on digital. Have any cases of blood clotting been reported in India? A viewer wants to know. Yeah, so now you're talking about there are two types of blood clotting issues. One is the blood clotting, which is directly related to the infection, to COVID. Because in COVID we are seeing a lot of blood clotting. And the other question is, which everybody's been talking about, is the vaccination and causing blood clots. The vaccination causing blood clots is a very, very rare thing. If you go back and look at the data from Europe, the last time I checked last week, there were like 2.5 crore people who got vaccination. 2.5 crore people got vaccination, and the blood clotting incidence was only 85 patients had blood clotting. Now, we still don't know if it was the vaccination which caused the blood clot versus it being an independent event, because people can themselves, the way the body works, you can have blood clots inherently. Something like smoking. Smoking increases the risk of blood clots. There are medicines which increase your blood clots, like your birth control pills. And sometimes genetic conditions can cause blood clots. What was the reason why those 8,500 people, why they got blood clots and the others did not? Did they have something which was predisposing? So I wouldn't worry too much about the blood clot, because if you get COVID, then it's much more fatal. The chances of fatality and getting really, really sick with COVID, especially with the new wave, are much higher than it is with the vaccination. Please get your vaccine, they're safe. I got mine, and I hope you got yours too.
Well, yes, that's a good point. That's a good point you've raised. I'm unfortunately not eligible just yet, but good to hear that you have got your vaccine. Dr. Gupta, another point though, that of course many are raising is the health infrastructure. Do you believe that the health infrastructure should have been strengthened in these weeks and months before, rather than scrambling to do it once again right now? Because we are seeing in this SOS situation, beds running out, vaccines shortage being reported, also essential medicines like remdesivir being black marketed, a shortage of them. Why is this happening, and what's to be done in this regard? Well, this is one of those things, right? I mean, all of us actually, there were papers which were written about it, why India didn't see that high of a spike as was expected with the first wave of COVID. If I was to say the first wave, I mean the entire country with the first wave. We were reaching 4-digit numbers and, like 9,000, 10,000 as early as mid-Feb. So, everybody got kind of complacent, including the government, including the people. And, it's not always easy to blame the government and never blame yourself, right? I mean, some famous people have said, do what you can do for your country and not what your country can do for you. So, so we all became complacent. Everybody went out, the streets were packed, the markets were packed, everybody's going out and meeting people, and the second wave, the virus mutated, and now we're in the midst of a second wave. Now, when you look at the infrastructure over there, I would like you to look at the infrastructure in two ways, right? The first part is the beds, the oxygen, the medications. That's easy to ramp up, right? I mean, you tell the factories, you get the Atmanirbhar Bharat team together and just tell them that let's do this on priority, let's put everything else in the back burner and let's work on this right now. And in a few days, in a week, 10 days, hopefully all these things should be sorted. The second part is the manpower infrastructure. What I mean by the manpower infrastructure is the doctors, the nurses, the paramedical staff. To make a basic doctor, it's 6 years of education. It takes 6 years for one doctor. It takes about 3 years to 4 years for one nurse. I'm not talking about the experience. I'm just saying basic education. So it's overhauling a medical system in the country is something which is not an overnight process. It takes time. Infrastructure can certainly be improved. The government is now coming out together and saying we're putting X number of beds in this temple, X number of beds in that banquet hall. The hotels, the stadiums, they're all being converted into healthcare for facilities. Yes, stay with us. Let me also bring in now Ravi Kumar, who's joining us live from Lucknow. Ravi, if we talk about Uttar Pradesh, what's the latest situation? The numbers have been increasing with each passing day. Today is also a lockdown now in all of UP. How is the lockdown panning out? Are people staying home? Have the police been implementing the lockdown? What's the situation on ground? देखिए 35 घंटे का कह सकते हैं ये लॉकडाउन किया गया है और साफ तौर पर अगर बात करें तो मैं आपको पीछे की सड़क दिखा दूं कि सड़क पर पूरी तरीके से सन्नाटा है, आवागमन ना के बराबर ही। अगर बात करें तो शहर के सभी इलाकों में कुछ ऐसे ही हालात। अगर राजधानी लखनऊ की बात करें, शनिवार की रात को ये 8 बजे से शुरुआत हुई है और सोमवार की सुबह 7 बजे तक ये चलता रहेगा। यानी कि जो जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों का आवागमन पूरी तरीके से प्रतिबंधित कर दिया गया। सरकार ने साफ तौर पर लोगों को निर्देशित कर दिया गया है कि बिना कारण अगर कोई घर से बाहर निकलता है तो उस पर कार्रवाई होगी लॉकडाउन को तोड़ने की। और साफ तौर पर अगर बात करें जिस तरीके से जरूरी सेवाओं को भी लोगों को तक पहुंचा दिया जाए, इसके लिए भी निर्देशित किया गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अग्निशमन सेवाएं वो लगातार जारी रहेंगी, यानी कि वो स्वच्छता के लिए काम करेंगे। उसके अलावा सैनिटाइजेशन का जो काम है वो किया जाएगा और सभी को मास्क लगाना बेहद ही अनिवार्य कर दिया गया है। अगर बिना मास्क के व्यक्ति अगर पकड़ा जाता है तो 1000 रुपये जुर्माना उससे वसूला जाएगा और दूसरी बार पकड़ा गया तो 10,000 रुपये जुर्माना उसको देना होगा। यानी सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भी लगातार अगर सख्ती है वो करने की जरूरत है तो वो की जाए, सरकार ने साफ कर दिया है। उसके अलावा अगर बात करें तो मास्क को लगाना बेहद ही अनिवार्य है। उसके अलावा सरकार ने भी माना है कहीं कहीं जो ऑक्सीजन की किल्लत पाई गई है उसको लेकर भी अब दूर किया जाए इस किल्लत को। साफ तौर पे 36 घंटे का बैकअप है वो ऑक्सीजन का होना चाहिए। और साफ तौर पे अगर बात करें तो ऑक्सीजन की पूर्ति की जाए, इसके लिए निर्देशित कर दिया गया सरकार की तरफ से और DRDO इसके लिए मदद कर रहा है। 1600 बेड के अलग अलग 3 अस्पताल लखनऊ में बनाए जाएंगे।
और साफ तौर पर अगर बात करें तो जिस तरीके से लगातार जो व्यवस्थाएं हो गई थी उसको वापस से फिर से व्यवस्थाओं को ठीक करने की जो जरूरी कदम है उसको उठाने के लिए सरकार की तरफ से कह दिया गया है। अभी देखना होगा कि अभी फिलहाल के अगर जो 3-4-5 दिनों में जो हालात बिगड़े थे उन हालातों को ठीक से करने में किस तरीके से सफलता हासिल होती है, लेकिन ये जरूर है कि अब लोग कहीं ना कहीं समझ रहे हैं। अगर बात करें तो कई बाजार ऐसे हैं जिन्होंने शुक्रवार, शनिवार और रविवार को बंद कर दिया खुद से ही। उसके अलावा बहुत से बाजार में जो दुकानें हैं वो काफी हद तक बंद करनी शुरू कर दी है, क्योंकि बाजार में कारण ही लोग जाते हैं। जब बाजार भी ज्यादातर अगर नहीं खुलेंगे तो कहीं ना कहीं लोग घरों से नहीं निकलेंगे और साथ तौर पे जो सख्ती है वो सड़कों पर नजर आ रही है। अगर आज की बात करें तो आज हम सुबह से ही देख रहे हैं तो बहुत ना के बराबर ही लोगों का आवागमन सड़कों पर हो रहा है और सख्ती है वो होती हुई नजर आ रही है, यानी कि जो असर है वो दिख रहा है साफ तौर पे इस पूरी बंदी का। जी बिल्कुल, रवि बने रहिए आप हमारे संग। राहुल का भी रुख कर लेते हैं इस वक्त। राहुल गौतम जुड़ चुके हैं हमारे संग दिल्ली से। राहुल, daily numbers rising steadily. Today Arvind Kejriwal addressing another press conference. What's the latest update? What did he share with the media? And also as far as the health situation in Delhi is concerned, Rahul, it's getting worse, isn't it, with beds now beginning to increasingly run out, and also the CM and Deputy CM urgently asking for more oxygen cylinders from the centre? Well, absolutely, Uday. It seems that the situation is quite grim and precarious if you talk about Delhi. Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal today held a very important meet with the 3 commissioners of MCD. And in fact, he has now urged upon the central government to increase the number of beds in the national capital, citing the surge in COVID-19 cases. We all know that how Delhi is facing crunch in terms of medical facilities. How people are not able to find beds in the hospitals, particularly the beds with oxygen beds and oxygen cylinders and ventilators. Apart from this, there is dire shortage or a severe shortage of injections, remdesivir injections and Fabiflu, the 2 important emergency drugs which are being prescribed for the treatment. Now, the Chief Minister Arvind Kejriwal, it seems that he has now hit the panic button, is now asserting upon the central government that only a timely and a full support of central government can actually improve the situation here in the national capital. Because just a few days back, Delhi was witnessing cases around 10 to 15,000, but in last 24 hours, Delhi has witnessed over 24,000 cases. And in fact, the positivity rate in the national capital has now shoot up to 30%, which means that if you are going to test 3 Delhiites, one of them is certainly going to turn out to be COVID positive. So this only shows that how situation is quite grim and precarious, and it seems that things are falling apart. And therefore, now Arvind Kejriwal has sought timely intervention of the central government, saying that they should now increase the number of beds. As we speak now, there are 1,800 beds reserved for COVID-19 patients that comes under the purview of central government. Arvind Kejriwal has said that they should be increased to 8,000, and then only, they would be cope up with this rising pressure on healthcare system in the national capital. अगर हेल्थ सिस्टम की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो यूपी में क्या स्थिति है इस वक्त रवि? क्या बिस्तर अवेलेबल हैं? क्या वहाँ भी किल्लत हो रही है ऑक्सीजन सिलेंडर्स की और रेमडेसिविर टैबलेटों की? देखिए, तमाम सारी दिक्कतें हैं। अगर बात करें तो बेडों की बहुत ही ज़्यादा किल्लत हो गई थी। अगर बात करें तो 2-3 दिनों में काफ़ी ऐसी शिकायतें आई थी कि लोगों को बेड नहीं मिल पा रहा था, और जिसकी वजह से तमाम सारे ऐसे लोग हैं जिनको वापस होना पड़ा था। कई सारे लोगों की मौत भी हो गई। कई जगह ऑक्सीजन की कमी की वजह से लोगों की मौत की खबर आई। तो साफ तौर पर और दिक्कत है वो ज़रूर काफ़ी बढ़ गई थी, और इसको लेकर सरकार ने अभी इस पूरे मामले को लेकर बहुत ही गंभीरता दिखाई है और साफ कर दिया गया है कि ऑक्सीजन की जो है कमी अब नहीं होनी चाहिए। यानी कि अस्पतालों में 36 घंटों का ऑक्सीजन होना चाहिए, यानी कि एडवांस पहले से ही रखना पड़ेगा, और उसके अलावा जो जरूरी है वो होना चाहिए। उसके अलावा आपके पास 36 घंटे का ऑक्सीजन जो है वो पहले से ही व्यवस्था करके रखनी पड़ेगी। उसके अलावा जो दूसरी जरूरी चीजें हैं, जो भी इक्विपमेंट चाहिए, वो सभी व्यवस्थित रूप से होने चाहिए, ताकि जो मरीज है उसको किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े। बेड बढ़ाए जा रहे हैं और अस्पतालों को और निजी अस्पतालों को शामिल किया गया है। उसके अलावा करीब
1600 बेड के 3 अस्पताल और स्थापित किए जाएंगे जहां पर कोरोना के मरीज हैं वो एडमिट किए जाएंगे, जहां पे उनका इलाज होगा। उसके अलावा केजीएमयू और बलरामपुर पूरी तरीके से कोविड अस्पतालों के लिए तैयार किया जा रहा है, यानी कि वहां पर केजीएमयू और बलरामपुर अस्पताल में कोविड के जो मरीजों का खास तौर पे इलाज होगा। तो साफ तौर पे धीरे धीरे व्यवस्थाएं बढ़ाई जा रही है, लेकिन जो अगर बात करें तो जो संक्रमण एकदम से इतना ज्यादा बढ़ गया है, यानी कि मरीजों की संख्या वो लगातार काफी बढ़ गई है। कई मरीज ऐसे थे जिसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी और जिसकी वजह से ये जो समस्या है वो सामने है, जिसकी वजह से कई सारे लोगों की मौतें भी हुई। तो साफ तौर पर शिकायत जरूर है आम लोगों की, लेकिन अब सरकार इस पूरे मामले को लेकर बेहद ही गंभीर है। अब साफ तौर पर निर्देशित कर दिया गया है कि जो भी जरूरी कदम है वो उठाया जाए, जो भी दवा है, जो भी इक्विपमेंट है, जो भी जरूरी तकनीकी उस सभी का इस्तेमाल किया जाए, ताकि जो भी कोरोना से पीड़ित संक्रमित मरीज आते हैं उनको समय से बेहतर इलाज दिया जा सके। जी रवि बनरी आप हमारे संग। लेट मी गो अक्रॉस टू कुलभूषण एट दिस पॉइंट हु इज जॉइनिंग अस फ्रॉम भोपाल. Kulbhushan, if we talk about Madhya Pradesh, then the government is taking a decision now to extend restrictions. Is that correct? Because numbers are steadily rising with each passing day. कुलभूषण, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है तो मैं आपसे पूछ रहा हूं मध्य प्रदेश सरकार की रणनीति के बारे में. क्या पाबंदियां जो हैं वो बढ़ाई जा रही हैं स्थिति को देखकर, क्योंकि केसों का बढ़ने का सिलसिला लगातार जारी है? बिल्कुल साफ तौर पे कहा जा सकता है कि मध्य प्रदेश में 26 अप्रैल तक मिनी लॉकडाउन कोरोना कर्फ्यू रहेगा. यहाँ पे इमरजेंसी जो सुविधाएं हैं वो चालू रहेंगी, डॉक्टरों की क्लिनिक ओपन रहेंगी, एम्बुलेंस मेडिकल की दुकानें ओपन रहेंगी. इसके साथ ही आदेश में इस बार ये रखा गया है सरकार की तरफ से कि जो किराने की दुकानें हैं, जो सांची के पार्लर हैं, उनको सीमित समय तक ही खोला जाएगा. इसके साथ ही जो भी किराना है वो आप ऑनलाइन या कॉल करके अपने घरों पे बुला सकते हैं. लेकिन सरकार के सामने प्रतिदिन जो है कई बड़ी चुनौतियां सामने आती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में ये देखा जा रहा है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता जो है लगातार कम होती नजर आ रही है. हॉस्पिटल में प्रतिदिन ऑक्सीजन की डिमांड जो है टन के हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है. तो यहाँ पे अब जो कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत का जो आंकड़ा मध्य प्रदेश में बढ़ रहा है वो ऑक्सीजन की कमी है. रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात की जाए तो पहले मध्य प्रदेश के सबसे बड़े हॉस्पिटल हमीदिया हॉस्पिटल, जहां पे तमाम पुलिस के अधिकारी मौजूद रहते हैं, नगर निगम के प्रशासन के अधिकारी मौजूद रहते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर हैं, डीन हैं. ऐसी स्थिति में यहां से 800 इंजेक्शन की चोरी हो जाना और इस पूरे मामले में अभी तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है. एक बड़ा सवाल ये भी उठता है, एक तरफ सरकार यहाँ पे तमाम व्यवस्था करती हुई नजर आ रही है, दूसरी तरफ हॉस्पिटल से ही अब जो है इंजेक्शनों की चोरी होने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है. आज ही मध्य प्रदेश में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जो मेडिकल से इंजेक्शन खरीद के 20,000 रुपए में एक रेमडेसिविर इंजेक्शन जो है बेचते हुए नजर आ रहे थे. ऑक्सीजन की कमी की अब ऐसी स्थिति है कि खुद डॉक्टर जो है वो ये अपील कर रहे हैं सरकार से कि जल्द से जल्द ऑक्सीजन जो है उनके हॉस्पिटल में उपलब्ध कराई जाए. लेकिन एक तस्वीर जो हमारे सामने आई अभी इंदौर में, जिस प्रकार से कल एक ऑक्सीजन का टैंकर पहुंचा था और किस प्रकार से बीजेपी के नेता इसे इवेंट बनाते हुए नजर आ रहे हैं. ऑक्सीजन के टैंकर की आधे घंटे वो पूजा करते रहे और भगवान से उन्होंने ये प्रार्थना की कि इस ऑक्सीजन से लोगों की जान बचे. लेकिन आधे घंटे पूजा पाठ के दौरान जो मरीज हैं वो हॉस्पिटल में तड़पते रहे, लेकिन जो बीजेपी के सांसद है, जो नेता हैं, वो पूजा पाठ में लिप्त रहे. तो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि इस संकट की घड़ी में भी जो बीजेपी के नेता हैं वो तमाम ऐसी चीजों को लेकर जो है इवेंट बनाते हुए नजर आ रहे हैं. मध्य प्रदेश में अब पुलिस के अधिकारियों वाकई में सीरियस हैं, क्या वो वाकई में गंभीर हैं इस स्थिति के बारे में, क्योंकि स्थिति जो है वो नियंत्रण में अब नहीं रही. रोज दिन ब दिन केसों का सिलसिला जो है बढ़ने का सिलसिला वो जारी है और हर दिन हम देख रहे हैं प्रतिदिन कि ये जो सीमा है, जो हर दिन सीमा एक बनती है, उसे तोड़ा जा रहा है. हर दिन एक नया आंकड़ा जो है वो सामने आता है. डॉक्टर गुप्ता, लेट मी गेट यू इन ओवर हियर. You know, many people are asking whether there is a need now of a lockdown, whether this is the only way out. We are seeing it in certain states like Maharashtra, weekend curfew, and others. Is it needed pan-India? So that's a very important and a very difficult question to answer.
whether there is a government lockdown or not, whether the center or the individual state decides to do a lockdown or not is different. We as the citizens of India, you and me, all of us, we both are essential workers, but all of us who are watching this should themselves instill a lockdown. Why does the government have to tell you do a lockdown? Let's use a common sense. Let's put a lockdown. Let's stop things. Most offices are now going on work from home anyway. The restaurants are closed in most places. The hotels are closed in most places. The gymnasiums are closed. Movie halls are closed. Let's do a self-imposed lockdown. And it may not be a bad idea for the government also to now actually say, or the local state governments to say that, yes, there is going to be a lockdown. Things are not looking good. And whether there is a complete lockdown or not, these weekend lockdowns, the night curfew, they kind of are there to remind you that, to tell you that things are not good. Things are going grim. Please stay safe. If they open everything, then everybody's going to be out on the street. So I think it's important for all of us as citizens of India to try and instill a lockdown within ourselves only. That yes, whether there's a lockdown by the government or not does not matter. I'm not going out. I'm not doing anything that is absolutely essential. And I can tell you, there are so many cases I know where somebody went out for a birthday party only for 5 people, met at home. All 5 families have gotten affected. 5 individual people met, all families affected. And it's just a very sad state. This is a very infectious and a very contagious virus, the mutant. Okay, let me bring in Devendra Bhardwaj as well at this point, who's joining us from Gurugram. Devendra, if we talk about the situation in Gurugram and Haryana, what are the latest numbers looking like? And looking at this situation, is the Haryana government swinging into action mode? देवेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? लग रहा है हमारा संपर्क जो है वो देवेंद्र के संग टूट चुका है, मगर हरियाणा की बात कर रहे थे तो आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी कोरोना से संक्रमित हो गए हैं। तो जैसे मैंने कहा कि हर दिन एक नया आंकड़ा आ रहा है, सेलिब्रिटीज टू द कॉमन मैन, लॉट ऑफ पीपल आर टेस्टिंग पॉजिटिव, वी नीड टू स्टे सेफ, वी नीड टू बी अलर्ट। थैंक यू Dr. Sameer Gupta for joining us. Thanks also to our reporters who joined us over the course of the last half hour. For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.